ओके, नमस्कार गाइस, वेलकम। सो एआई एचआर का जो 2018 में पेपर हुआ था, दिसंबर 2018 में, आज हम इसको कंप्लीटली एक एक करके सारे सवाल हम इसके सोल्व करेंगे। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो हम लोगों ने एआई एचआर के बारे में लगाई हैं। सो विल एडवाइज कि आप उनको जरूर देख लीजिएगा बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो जैसे ही आप ह्यूमन पेटस की वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन यू विल गो ऑन द पेज ऑन एआई, ठीक है, इस वाले पेज पर अगर आप आएंगे एंड यू विल लैंड ऑन दिस पेज, स्क्रॉल डाउन ऑन दिस पेज और यहाँ कुछ वीडियोज हैं। पहले कि अपना सिलेबस का एनालिसिस क्या है, फिर उसमें किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, इस सारे सिलेबस में क्या चीजें हमें किस प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है, और ये भी कि क्या क्या छोड़ देना है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट या एग्जाम का पैटर्न, इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ कुछ डाला हुआ है। सो गाइस, इस वाले वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पुराने वाला पेपर जो 2018 में हुआ था, लास्ट पेपर 3 दिसंबर 2018 को हुआ था, जिसके फॉर्म जुलाई 18 में भरे गए थे, उस वाले पेपर के हम एक एक करके हम लोग सारे सवाल करेंगे। सो दैट वी गेट वेरी गुड आइडिया कि किस तरह के सवाल आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, एंड वी आर रेडी फॉर दैट। इफ यू वांट टू एनरोल विद ह्यूमन पेटस, बड़ा ही आसान है। गो टू द वेबसाइट और आप AIHR के पेज पे जाइए एंड गो थ्रू एवरीथिंग इंक्लूडिंग दीज FAQs। यहाँ जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एंड देन यू कैन एनरोल विद अस फॉर AIHR। अनदर थिंग गाइज, अगर कुछ ऐसा है जो आप हमारी टीम से डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। सो अगर आप अपने फोन से ह्यूमन पेटस का वेबसाइट खोलोगे, सो लेफ्ट को नीचे एक लिंक बन के आएगा, चैट नाउ। क्लिक ऑन दैट लिंक। दैट लिंक विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड और आप हमें बता दीजिए वट एवर यू फील लाइक। यू कैन ऑल्सो टेक 1 डे फ्री ट्रायल टू अंडरस्टैंड कि ये कोर्स कैसे बना है, कैसे हमने इसमें क्या कवर किया है, टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड टीचिंग बोथ। एंड इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक, अगर आप उसको क्लिक करोगे, दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम थ्रू चैट वाया व्हाट्सएप चैट, एंड यू कैन गेट कनेक्टेड एंड यू कैन लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक। सो गाइस, शुरू करते हैं एंड लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस जो कि 2018 के पेपर में आए थे। एक एक करके हम इनको शुरू करते हैं। ओके, सो गाइस, फर्स्ट वन, arrange the following arrange the following words in a meaningful manner. So guys, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले we have got egg which is my 2। उसके बाद then we have got larva which is 4। उसके बाद we have pupa which is 3। एंड उसके बाद बटरफ्लाई फाइनली विच इज 1। 2 4 3 1 एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिलोजिज्म का सवाल है। सो गाइज, व्हाट इज गिवन टू अस? सम एप्पल्स आर pears and some pears are guavas, so we can also present that this is apple, then this is pears, ठीक है। अब गवावा कहाँ हो सकता है? गवावा pears के एप्पल के बाहर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देर मल्टीपल वेज यू कैन हैव गवावा। लेकिन अगर आप कंक्लूजन देखोगे, ये बोलता है सम गवावाज आर एप्पल एंड दूसरा नो गवावा इज एप्पल, कि या तो कुछ गवावा एप्पल है या फिर कोई गवावा एप्पल नहीं है। सो इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा। सो आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, इसके अलावा कोई और केस बनता नहीं है। सो दोनों कंक्लूजन में से एक तो डेफिनेटली होगा ही होगा। सो डायरेक्शन पे ये वाला सवाल आया है, ठीक है। एंड इट सेज, सो दिस इज माय नॉर्थ, दिस इज माय साउथ, दिस इज माय ईस्ट, दिस इज माय वेस्ट, ठीक है। So if southeast becomes north and northeast, so guys this is my northeast and this is my southeast, ठीक है। तो ये बोलता है कि if साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट नॉर्थ का मतलब क्या है कि हमने इसको इतना रोटेट कर दिया। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट का मतलब क्या है कि यहां से हमने इसको इतना रोटेट कर दिया, ठीक है। सेम थिंग। सो साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा? सो गाइस, सिमिलरली अगर मैं साउथ वेस्ट विच विल बी हेयर, साउथ वेस्ट कहाँ होगा? सो दिस विल बी द साउथ वेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा साउथ, किसको? साउथ वेस्ट। सो गाइस, साउथ वेस्ट इज ओवर हेयर, ठीक है। सो दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, तो अगर इतना ही रोटेशन इसको लेके जाओगे तो इट विल बिकम
east, which is my option D. Okay, next one. Six friends A, B, C, D, F are watching a movie sitting in a row. B, C, E, F are girls, remaining are boys. So we have got A, B, C, D, E, and F. And we have got boys and girls. So let plus be boys. So A is a boy and then D is also a boy, which is given. Remaining all are girls, which are with minus sign. Okay. उसके अलावा हमें क्या लिखा है ADB आर हैविंग चिप्स सो चिप्स को मैं लिख लेता हूँ CH सो CH इज चिप्स देन D इज आल्सो चिप्स रेस्ट आर हैविंग पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न को लिख लेते हैं हम लोग क्या PO इज माय पॉपकॉर्न and then ACB are having Coca-Cola ACB so Coca-Cola and then Coca-Cola and AC and B are having Coca-Cola and remaining are having Pepsi. Pepsi will become PE and PE. Okay, what is asked? Which two girls are having popcorn and Pepsi? So guys, you can look it here. Popcorn and Pepsi, E and F. Correct answer is option A. In a certain language, among is coded as COOMF. So you just to write the numbers of these letters. So AMONG is coded as COOMF and we have to figure out the pattern. So what is happening? So A is 1, M is 13, O is 15, this is 14, this is 7. What is C? C is 3, this is 15, again 15, 13 and 6. Now you can figure out the pattern. So what is the pattern, guys? This is plus 2, this is plus 2, this is plus 0, this is minus 1, and again this is minus 1. Okay, now we have to find out what DIARY stands for. So DIARY, what does this stands for? And my D is 4, 9, 1, 18, and 25. And again, you'll use the same pattern, make it plus 2, make it plus 2, make it plus 0, make it minus 1, make it minus 1. And what do we get? We get 6, 11, 1, 17, and 24, which represents what? F, K, A, Q, and X. Correct answer is option C. Next one, identify the odd pair. So guys, remaining three are having same meaning other than rich and indigent. So indigent is nothing but poor. So this is opposite in meaning. बाकी तीनों का meaning almost same है. You have to arrange this in a meaningful word. So the correct, it will become, if you arrange it, it will become number NUMBER and the letters are 405312, which is my option D. This is a series, guys, and if you look at this series, what is happening? 95106 128 161 205, and we have to find what comes next. So guys, in this series, this is plus 11, this is plus 22, this is plus 33, this is plus 44. So next one should be plus 55. So 205 plus 55 is 260. Correct answer is option A. Pointing to a photograph, Ashish said the girl is the wife of grandson of my mother. So she's what? Daughter-in-law. Option B. So guys, what is happening over here? So look at these two. So 7q plus 1 is equal to 344. Similarly, 9q plus 1 will become 730. Correct answer is option D. Again, we have to see which are in a so guys, only way you can do this question is that just write down the numbers for all of them. So this one is 5, 13, 10, 23, and 24. This one is, the next one is 5, 10, 14, 17, and 19. The next one is 4, 8, 13, 16, and 18. And the last one is 4, 9, 14, 16, 18. So guys, you will see trend only in the second one, in which this is plus 5, plus 4, plus 3, and plus 2. Correct answer is option
B. You have to count the number of triangles in the figure. Okay. So guys, 1, 2, and then 3, 4, and then this one, 5. Okay. So now we have 5. Similarly, you will have 5 this way. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. So 5 plus 4 becomes 9. Okay. Now we'll have 5 more. So 1, 2, 3, 4, and 5, and this one. So total will become 14. If position of first and sixth letter are interchanged, so this is 8, 7, 6, 9, 5, 4, 1, 3, 2. So you are changing position of first and sixth. So 8 and 4 are interchanged, and second and seventh are also interchanged. So 7 and 1 is also interchanged. So guys, what do we get? 4, 1, 6, 9, 5, 8, 7, 3, 2. Okay. Now, okay. Now, which of the following will be third to left of seventh digit from end? So, seven digit from end will be seven digit from the left end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and third left, which will become 9. Correct answer is option B. We have to find out the fourth term, which is related to third term in a way that first and second are related. So guys, again, write them down. F, E, J, I is related to N, M, R, Q. So these numbers will be 6, 5, 10, 9. This will be 14, 13, 18, 17. So guys, what is the pattern? You will see that all of them are what? Plus 8. Similarly, if I have H, G, L, K, so which is nothing but 8, 7, 12, 11. So move all of them. Move all of them plus 8, and what you will get is P, O, T, S. Correct answer is option C. So guys, all of them are mirror images. So all of them are mirror images to each other except second. So second is the answer. Now let's look at maths questions. A person bought 20 article for 2400. So this is the cost price of 20 article. Cost price is 2400 and sold them at a profit equal to selling price of fourth article. So let us suppose selling price of one article is what? Let it be X. Okay. So so what will be selling of 20? 20x. Okay. But the profit is equal to what? Selling price of four articles. So cost price 2400 plus profit 4x is equal to selling price 20x. X will come out to be 150. Correct answer is option C. In an office, 60% of employees are male, 75% of employees, which includes 69 females, are graduates. If there are 120 male employees, then what percentage of male employees are graduates? So that we can do easily such questions with cross tabulation. Okay. Another thing, guys, as we can see, the difficulty level of this paper is slightly more than it's slightly more than what typically comes in Coal India or SSC typical Coal India or IBPS or SSC exams. So the difficult level of mathematics, especially maths, is slightly more than other exams, other PSU exam. This is probably because Airport Authority of India also conducts exam for ATS and all those technical branches. So all of them have got same paper one. So that might be the reason.
But of course, this is slightly difficult than other PSUs, and you'll be able to also see this thing. Okay. So guys, what it says in office, 60% of employees are male, 75% of employees, which includes 69 females, are graduate. If there are 120 male, if there are 120 male employees, then what percentage of male employees are graduates? So guys, you have to start from somewhere. So if okay, so it says 120 are male employees. So total, okay, so let me write it here. So this is my male, this is my female, this is graduate, and this is non-graduate. Okay. What it says that 120 are male employees. So total male is 120 and 60% of our male. So it is given 60% are male. Then it is given 120 are email. So 60% is 120. Then remaining 40% will be what? 80. So female are 80 and total becomes 200. Okay. Next, what is given? 75% of employees are graduates. So what is 75% of 200? 150 are graduates. So non-graduates will be remaining 50. Now out of these 150 graduates, 69 are female. So 69 are female. So how many will be males who are graduate? So subtract 69 from 150, it will come out to be 81. Therefore, your answer will be so what is required? What percentage of male are graduates? So total male is what? 120. Out of them are graduates are 81. So percentage will be 67.5 percentage, which is my option B. Next one, this is on graph. This is on graph, pie chart and sorry, not graph, pie chart and a table. So what is the average export of textile? So textile is 25% consistently. So yeah, you have to find average of all of them. So sum them up and divide them by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sum them up, divide them by 6. Average come out to be 360. So 25% of 360 will be what? 90. Correct answer is option B. Next one, the export of garments and cosmetic together in May. Okay. So guys, how much is in May? May is 300. So May is 300. But we have to look for garments and cosmetics only, which will be 28% and 12%. So 40% of 300 will be my yeah, 40% of 300 will be my numerator. Okay. And what will be my denominator? So for denominator, what I need first together of March and April. So March and April together will be March and April together will be 770. And but we need it only for jewelry and leather. So jewelry and leather will be 20 plus 15, which is 35% is. So you have to calculate what percentage is numerator from denominator, multiply this by 100, and this comes out to be 44.25 percentage, which is option C. Next one, Tanu ran against the wind and then turned back. Okay. For half the time she ran earlier, So if she goes for time 2t time, then she comes back for time t. Okay. The distance covered against the wind was 1/3 of the with the wind. So if with the wind it was x distance, then it becomes 3x. If speed of wind was 6, so if speed of Tanu is t, no, not t, let's take it to be v. So speed is v, then while she's going against the wind, the speed will be v minus 5. When coming back, v plus 5. And now you can put it that while going the distance, x will be speed into time. While coming back, the distance will be speed into time. Okay. Now divide, this is 2, this is 1. Divide 2 by 1. T will cancel out, x will get cancelled out, and v will come out to be 7. Correct answer is option D. Okay, this is on graph, and it says total amount invested by company A and B is 42 lakh, while amount invested B was 50% of A. So total is 42. So it means the
Total is 42, but the B is what? B is half of A. So my B will be uh, 14 and A will be 28. Okay. Then it says profit in 2015. So in 2015, which is over here, the profit of A is 25 percentage and the profit of B is what? 30 percentage. So we have to add them up. So profit of A becomes 7. So profit of A becomes, guys, how much? 25 percentage of 28, which is 7. And profit of B will become what? 14 into 30%, which is 4.2. Add them up, option C. If amounts invested by company A and B are equal in 2012, then what is ratio of their income? So if amount of A is what? Let amount of A is X. Amount of B will also be X because it is given to be equal in 2012. And then, guys, what is given to us? In for in 2012 for A it is 45 percentage and profit. Okay. And for B it is 30 percentage. Okay. So for A total income will become what? X plus 45% of A, which is 1.45x. And for B it will be X plus 30% of X, which is 1.30x. So divide them, find the ratio. It will be 29 by 26. Correct answer is option A. So this has to be simplified. So it's with the method of simplification. The value of the first fraction comes out to be 16. This will come out to be 0.8, and you'll get your correct answer to be option C, which is 20. Again, guys, this is also from the simple topic of simplification. This can be rewritten as 6 into 7 under root. This will be minus 5, 6 under root. This will be 7, 6 under root. This will be what? Minus 1 by 2, 6. And this will be what? Minus 3 by 2, 6. So you can simplify all of them now. So what you will finally get is 6 root 7 only. And this is equal to what? A plus B under root 7. It means what? It means that my A is 0 and B is 6. We have to find 5A minus B. So 5 minus B will become option C, which is minus 6. 10th, a retailer buys an article for 540 after getting two successive discount of on MRP of 800. First discount is 25 percentage. Let us find second discount. So 800, first discount of 2500. It means what? 800 into 0.75, which is 600. Then there was another discount which made the price to be 540. So what will happen, guys, if price is made from 600 to 540? So decrease of minus 60, which is a discount of 10 percentage. So what do we conclude? The second discount was 10 percentage. If he sells the article by allowing a single discount 1.5 times the second discount. So 1.5 times of 10 will be 15 percentage. So if discount is 15 percentage, okay, on what? On 800, what will be the price? 800 into 0.85, because discount is 15%. This will be 680. We have to find the profit percentage. So he bought it for 540, sold it for 680. Find the profit percentage, which will come out to be 25.9 percentage, which is closest to option B. 11th question. A difference between areas of a circle and a regular hexagon inscribed in a circle. So guys, what is given? This is my hexagon and we have a circle like this. Okay. So we have to find difference between area. So area of circle will be what? Because this side is given to be 10, this is 10, and this is regular hexagon, this will be 10 only. Okay. So area of circle will become what? Pi r square. So pi 10 square, which will be 314. And what will be area of this hexagon? There are 6 equilateral triangle. 6 into root 3 by 4 into 10 square. And this comes out to be 259.
and their difference will be approximately 54.5, which is option D. Next one. 162 spherical balls are melted and made into a cylinder. So volume has to remain same. So 162 balls, and what will be volume? 4 by 3 pi r cube. Small r is the radius of the ball. Okay. Now this gets converted into a cylinder, which cylinder has got volume is pi r square into h, but it is given that radius is equal to height. So in place of h, I write r only, and what I have to find? So pi will get cancelled out. So r cube divided by r cube, which is radius of cylinder and radius of ball, will be equal to 162 into 4 by 3, which will be equal to 216. So r by r will be equal to 6, which is my correct answer is option C. 14. HCF and LCM of two numbers are given. If two numbers are of 3 digits each, what is sum of the number? So there is a property. If there are two numbers, then their HCF into LCM is nothing but multiplication of numbers only. So HCF is 37, LCM is 555. You can break down this 555 into what? This can be written as 37 into 5 into 3. Now we have got two terms of 3 digit each, which will get multiply 37 by this, 37 by this. So 37 into 3 will become what? 111, and 37 into 5 will become what? 185. These are the two numbers. And what is their sum? So sum of 111 and 185 will be equal to 296. A truck covers a distance of 400 kilometer at a certain speed. If speed is decreased by 20 kilometer, then it will take 1 hour more to cover. So 400 kilometer being covered by speed of s, it will take some time. Now speed is decreased by 20, then this will be the time, but this time is 1 hour less. So I subtract 1 from here, and you simplify this, s will come out to be 100. Correct answer is option. Let's begin with the first question. The first question is select the wrongly spelled word. Wrongly spelled word here is notoriety, and the correct spelling is Notoriety, which is well known for something bad. We say badnaam in Hindi. The second question is select the most appropriate synonym of the given word, adamant. So the most appropriate synonym are similar words. So the most appropriate synonym for adamant is obstinate. 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 Answer D. Correct. So select the most appropriate option to fill in the blank. Dash Chotilal is a plumber. He can do the electrician's job also. So the correct answer here is although. Now although is used to depict contrasting statements. So in the following sentence, four words or phrases have been underlined. One of them is incorrect. Choose the incorrect word or phrase from the given option. So here the correct answer is benefit of the. So the incorrect word is benefit of the. So what is the explanation for this? This is incorrect use of preposition. Incorrect use of preposition. Incorrect use of preposition. Right? Next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. The driver dashed his head at the dashboard at the time of the accident. So the correct answer here is banged. Banged is in past tense, so that is the correct answer. Next question. Select the wrongly spelt word. Piteous. Piteous is the wrongly spelt word here, so answer is piteous. Select the most appropriate antonym of the given word. So antonym are opposite. So the opposite of supple is rigid. Rigid means stiff. Stiff or something that does not bend easily. Now the next question is select the most appropriate option to fill in the blank. I'm sure she was talking to her friend about our fight. So the correct answer is DR. So why we have used DR? Because this is the usage of possessive form. So possessive form is used to indicate something belonging to the speaker and another person. So here we have used possessive form.
So in the following sentence, four words or phrases have been underlined. One of them is incorrect. Choose the incorrect word or phrase from the given option. Here the answer is A, will be back. So we have used simple past tense am in this sentence. We will use am in this sentence. So the correct answer will be back, but what will be the correct statement? I will take up the new assignment only after I am back from the vacation. Question number 10 is select the correct passive form of the given sentence. Correct passive form of the given sentence. Given sentence is the police took the key protesters to the jail. In this, the passive voice object of the sentence becomes subject of the passive sentence and the verb changes accordingly. So here the subject is the police who is performing the action and the object is the key protesters. The key protesters are the object and they are receiving the action. Next question. So in the following sentence, four words or phrases have been underlined. One of them is incorrect. Choose the incorrect word or phrase from the given option. So we had been walking for about 10 minutes when we suddenly realized we had been moving in the wrong direction. So here we suddenly realize is incorrect or suddenly realize is incorrect. So the correct option is B, suddenly realized. So what will be the correct sentence? We had been walking for about 10 minutes when we suddenly realized we had been moving in the wrong direction. It will be in the past tense. Select the option which is not an antonym of another word by way of adding the prefix miss. So antonym, opposite words. So here the most appropriate answer will be misgiving. Select the most appropriate indirect form of the given sentence. The captain said to me, I will let them know about it. So here in indirect speech, pronouns like I changes to he and me changes to them and will in tense changes to would. So I changes to he, me changes to them, and will change to would. So the correct sentence will be, or the correct indirect form will be, the captain told me that he would let them know about that. Okay. Select the option which is not an antonym of another word by way of adding the prefix in. So in this, the correct answer is inculcate. See, inculcate. So what is the meaning of inculcate? To imbibe something in somebody, right? Next, select the most appropriate option to fill in the blank. So Amazon River is one of the dash rivers in the world because of its aquatic life. The answer will be most dangerous. Now, usually the one of the like one of the is followed by superlative form is followed by superlative form, which helps to compare different things. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास. नाउ हम सबको पता है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है, पर वो इन ऑप्शंस में पूछ रहा है जो हाईएस्ट है. तो करेक्ट आंसर है आपका नंगा पर्वत, जो कि गिलगित बलूचिस्तान के एरिया में है, ऑन अराउंड 8126 मीटर की ऊंचाई पर है. बाकी जो है वो 8000 मीटर के ऊपर नहीं है, वो उसके नीचे है, जैसे आपका गुरला मंदाता है, नुप्से है या यंगरा है. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? देयर आर 12 शेड्यूल्स. ठीक है, इनिशियली 8 शेड्यूल थे, फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट हुआ और ये 12 हो गया. ए इज द राइट आंसर. The two architects who designed New Delhi and शाहजहानाबाद were Edward Lutyens, जैसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं. इन्होंने किसके साथ जो है इसको बनाया था? हर्बर्ट बेकर इज द राइट आंसर. जैसे आप इंडिया गेट देखते हैं दिल्ली में या फिर राष्ट्रपति भवन देखते हैं, सो दीज आर्किटेक्चर मार्वलस जो हैं, दीज आर द डिजाइन्स ऑफ दिस पीपल. ठीक है. डैश सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू. तो जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ए इज द राइट आंसर. सॉरी, बी इज द राइट आंसर. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास रिफर टू मोर देन. जो चोलास का इंस्क्रिप्शन है, ये गाइज है चोलास
मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। ठीक है, चोलास जो थे वो सदर्न रीजन में लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर थे 8 से लेके 12th सेंचुरी के बीच में। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर सार्क फॉर्म, जो सार्क है वो किस साल बनी? ठीक है, ये बनी आपकी 1985 में। इंडिया इसका सदस्य है और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो नेपाल काठमांडू में है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून इज इक्वल टू, तो गाइस इस मून पे जो है ग्रेविटी बदल जाएगी। पहले तो वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, दिस इज वेट। ठीक है, ग्रेविटी बदल जाएगी इसलिए वेट बदल जाएगा पर मास सेम रहेगा। अर्थ पे इट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मून पे ये कितना हो जाएगा? मून पे ये हो जाएगा आपका 1.635 के अराउंड, यानी कि 1/6 हो गया ये। तो 1/6 इज द राइट आंसर, बी। इन विच इंडियन सिटी वॉज अ डॉक्यूमेंट डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 रिलीज, तो कहाँ रिलीज हुआ था ये? 2018 का करंट अफेयर्स है, ये आपका गुवाहाटी में रिलीज हुआ था। ठीक है, टेक्निकली इक्विप्ड बनाना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। Who among the following launched Green Mahanadi mission, a planetration drive under which 5 crore saplings will be placed in the Mahanadi river basin? तो महानदी रिवर बेसिन कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और नवीन पटनायक ने जो है इसे लॉन्च किया था। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे अमंग द स्टेट सबसे कम किसमें थी? हरियाणा में, विच इज 90। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिक्किम में सबसे कम है, विच इज 32। ठीक है, हाउ मेनी पीपल रिसीव द रमन मैगसेसे अवार्ड 2018, तो 1950s के अराउंड इस अवार्ड की स्थापना हुई थी फॉर 6 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें जर्नलिज्म है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है एंड सो ऑन। और ये कौन थे? ये फिलीपींस के प्रधान राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इनके ऑनर में जो है ये अवार्ड लॉन्च किया गया, विच इज कंसीडर्ड एज एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज। और इसका करेक्ट आंसर है 6। ठीक है, lactometers which are used to determine the purity of a sample of milk and hydrometers used for determining the density of liquids are based on which? They are based on simply आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो जितना डिस्प्लेस्ड हुआ उतना ही उसके ऊपर ऊपर फोर्स लगता है, विच इज बायंड फोर्स। ठीक है, तो डेंसिटी मेजर करता है। अगर लिक्विड अगर पानी मिला हुआ है तो इलेक्ट्रोमीटर नीचे चला जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर रहेगा। ठीक है, डेंस में वो ऊपर रहेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड, तो जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन है वो अभी है मोनाको, इसके बाद है आपका मकाऊ, फिर सिंगापुर। अराउंड 25,000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, in the year of 1888, an extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by Robert Clark. तो रॉबर्ट क्लार्क ने जो वर्ल्ड उस टाइम पे सिटीजन्स थे उनके लिए ये स्कीम लेके आए थे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एज पर द ऋग्वेद, थ्री गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। अग्नि जो कि फायर के गॉड है, इंद्र जो कि वॉर और थंडरबोल्ट थंडर्स के गॉड है, एंड सोम, सोम किसके? जो सोम प्लांट होता है जिससे वो सोम रस बनता है, उसके गॉड थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एचआर डोमेन। पहला क्वेश्चन कहता है टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिफ्यूजल ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉय टू कंटिन्यू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम इज नोन एज, क्या है भाई? लॉकआउट कहते हैं इसको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A form of organization with relatively few layers of management thereby making it less bureaucratic, तो ये क्या है? ये है आपके फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग हैं, विच इज ऑप्शन सी, सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 एंड क्लॉज ए। ठीक है, in which amendment the definition of workman has been replaced by the definition of employee? वो कौन सा था? वो था आपका 2009 अमेंडमेंट, जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम हुआ था 2010 जनवरी में। ठीक है, which of the following is not an objective of the right to information act 2005? प्रमोट ट्रांसपेरेंसी है, एम्पावरिंग द सिटीजंस है, कंटेन करप्शन है, पर ये नहीं है। इंप्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। सी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल काफी ही डायरेक्ट आ रहे हैं। अ फाइनेंशियल रेशियो मेजरिंग हाउ मच अ फर्म इज अर्निंग ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज नथिंग बट नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100।
ठीक है, दैट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी, ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिंज बेनिफिट, जो भी नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उन सबको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। तो ये है, ये है, ये है, यहां पैसा दिया जाएगा इसलिए ये नहीं है, और हमारा करेक्ट आंसर भी बन जाएगा। द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडेंटिफिकेशन विद एंड रिस्पेक्ट फॉर द पावर होल्डर, यानी कि एडमिरेशन है लीडर के लिए, करेक्ट करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफरेंट पावर। बी इज द राइट आंसर। Which of the following is covered under a definition of factory in the Factories Act? तो बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन में जब हम फैक्ट्री पढ़ते हैं तो वहां कई सारे एक्सेप्शंस हैं जिनको बोलना क्या है, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज फैक्ट्री। माइंस को फैक्ट्री नहीं माना जाता, होटल को नहीं माना जाता, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस को फैक्ट्री नहीं माना जाता। तो बचा क्या है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। Behaviors that other perceive as self-serving tactics for personal gain at the expense of other people and possibly the organization is referred to as, क्या कहते हैं इसको, organizational politics कहते हैं इसको। ठीक है, a set of abilities to perceive and express emotions, assimilate emotion in thought, understand and reason with emotion and regulate emotion in oneself and other is known as emotional intelligence. As per the Factories Act, the minimum number of workers required in a factory for the mandatory appointment of safety officer, Section 40B हमें इसके बारे में बताता है 1000 or more। ठीक है, यानी कि A। Which of the following involves breaking information down into meaningful units and then arranging these in a proper way to form a logical and sequential learning program? क्या कहते हैं इसको, programmed instruction कहते हैं इसको। Payment of Bonus Act was enacted in the year of 1965. What percentage of wages is a subsistence allowance payable for the first 90 days to a workman who was suspended pending inquiry? Industrial Employment Standing Order Act Section 10A, ठीक है, उसका अमेंडमेंट है 1982 का। पहले 90 दिन में 50, उसके बाद 75। The compression of a hierarchy of pay grades or salary ranges into the smaller number of wide bands, क्या कहते हैं इसको, हम सैलरीज और पे ग्रेड्स को हम स्मॉलर नंबर्स ऑफ वाइड बैंड में मिलाते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीमेंट अच्छा हो, उसे ब्रॉड बैंडिंग कहते हैं। In which year was the Arbitration and Conciliation Act enacted? It was enacted in the year of 1996. An employee who discloses organizational wrongdoing to parties who can take action is whistleblower. A type of conflict in which people focus their discussion on the issue while maintaining respect for people having other point of view. क्या कहते हैं इसको, constructive conflict कहते हैं। Interstate migrant workmen applies to every factory, every establishment or contractor in which 5 or more interstate workmen are employed. A is the right answer. What is the correct full form of DSS? That is Decision Support System, जिसको हम बहुत सारा डेटा देते हैं, जिसको एनालाइज करते हैं और हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का इनेक्टमेंट ईयर कौन सा है, 1961। According to a minimum wages act, who shall fix the minimum rate of wages payable to the employee? Section 3 appropriate government करता है। Which transaction is appropriated and expected and follows the natural order of healthy human relationship? तो ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस का क्वेश्चन आया है जिसमें अगर ईगो स्टेट सेम हो तो उसमें ट्रांजैक्शन बेस्ट होती है, और वो है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। The constitutional provision related to law making procedure is adopted from which country's constitution? ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से adopted. Which of the following does not come under the CSR activities of an organization? Environmental management है, कम्युनिटी रीडेवलपमेंट है, बैलेंसिंग वर्क लाइफ है, गेन शेयरिंग टू एम्प्लॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है। इन द केस ऑफ अ नॉन सीजन एस्टैब्लिशमेंट, ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड द रेट ऑफ, सारे ऑप्शंस गलत हैं। इट इज कैलकुलेटेड द रेट ऑफ 7 days of wages, लास्ट राउंड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन ड्रॉप्ड। What is the minimum bonus payable by every industry and establishment as per the section 10 of the Payment of Bonus Act, which is 8.33%. The year in which Payment of Wages Act was enacted in India is 1936. Among the following, which is a trade union theory? The Marxism theory is a trade union theory. इसमें ये कहता है कि trade union जो है उनका rise ही इसलिए हुआ because there is a exploitation of the employer side or the capitalism. The process whereby two or more conflicting parties attempt to resolve their divergent goals by redefining the terms of their interdependence is negotiation. What is the requirement in terms of the number of employees in an establishment that comes under the purview of I Standing Order Act? That is 100 or more.
As per the Compensation Act, within how many days an employer must make a deposit to with the commissioner if he is liable to pay compensation? Within 30 days of being served the notice. Under the section 31 of the Act, the maximum bonus, including the productivity linked bonus that can be paid in an accounting year, shall not exceed 20% of the salary wage of an employee. Which of the following is not a step in the appraisal process? Forecasting the future manpower requirement is not a step in the appraisal process. The view that leadership is broadly distributed rather than assigned to one person, such that people within the team and organization lead each other, is a shared leadership. Which of the following is not included for the calculation of wages under the interstate migrant workmen? तो वहां पे exceptions क्या है, exclusion क्या है? वो है any traveling alliances or the value of any traveling concession. C is the right answer. In which year EPF Act was enacted? 1952. What is the minimum continuous service eligibility for gratuity as per the Act? Section 4, 5 साल. Which error arises where an interviewer expects his or own quality, skills and values in an applicant? That is projection. B is the right answer. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी आए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज बायस्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर एज इट कवर्स एक्सीडेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो गाइस इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ही बैलेंस आंसर देना है। ठीक है, जिसमें पहली बात तो ये क्लियर है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एम्प्लॉय की तरफदारी करनी है, बिकॉज ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जिसका पर्पज ही यही है कि हम एम्प्लॉयज को वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड कर सकें। दूसरा, सेफ्टी जो है प्रोवाइड करने के लिए ये मोटिवेट करता है। मोटिवेट क्या करता है? ये वो प्रोविजन देता है जिससे हम उस एनवायरनमेंट में सेफ्टी को बढ़ाने, वो एक इंसेंटिव दे रहा है एम्प्लॉयर को कि वो सेफ्टी को यहाँ पे बढ़ाए। ठीक है, तीसरा जो है कि तीसरी बात यह है कि जो एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी है उसको रैंडम नहीं रखा है, उसको वेल डिफाइंड किया है। ठीक है, जहां एक्सेप्शंस देने थे वहां एक्सेप्शंस दिए हैं। ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहां पे लिखनी है, देन इट विल बी अ वेरी गुड आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये पैसेज दिया है, पैसेज से रिलेटेड बात सवाल पूछा गया है, तो गाइज इसमें भी आपको एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब पैसेज लॉयल्टी की बात करते हैं कि लॉयल्टी आउटडेटेड हो गई है, लॉयल्टी हैज बीन डेड एंड जो है अब वो दिन चले गए हैं जहां पे लॉयल्टी है। तो व्हाट आर द थॉट्स ऑन योर इशू? अगेन बैलेंस आंसर आपको लिखना है कि भाई लॉयल्टी जो है इट इज राइट कि आज लॉयल्टी इतनी मैटर नहीं करती है, बट लॉयल्टी को रीडिफाइन करना होगा इन टर्म्स ऑफ द करेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरा, डू यू एग्री विद द व्यू पॉइंट लॉयल्टी मैटर्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्कप्लेस एनवायरनमेंट? बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद दिस कि कंटेम्प्रेरी वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में जो लॉयल्टी है वो मैटर करती है। व्हाई इट मैटर्स? क्योंकि भाई लॉयल्टी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही होते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से खुद को जोड़ सकता है, वो एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, वो उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। ठीक है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉय हैज टू बी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कि उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा, व्हाट इज द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंपनी इफ इट लैक्स एम्प्लॉय लॉयल्टी? अगर एम्प्लॉय लॉयल्टी नहीं है तो एम्प्लॉय मोरल सबसे पहले कम है, टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो बढ़ जाएगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे, एट्रिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, चौथा, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, लॉयल्टी और एम्प्लॉय एफिशिएंसी? जाहिर सी बात है दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एम्प्लॉय एफिशिएंसी जो है वो क्या कहती है कि भाई एम्प्लॉय जो है वो कम समय में बेहतर काम करे, और इट इज लॉयल्टी इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लीमेंट टू इट, बिकॉज लॉयल्टी रहेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के संग अलाइन हो पाएगा। अगेन बैलेंस आंसर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेप्स दैट अ कंपनी कैन टेक टू रिटेन द लॉयल्टी ऑफ इट्स टॉप परफॉर्मर इन द कंटेम्प्रेरी कॉम्पिटिटिव वर्कप्लेस? तो भाई उसके लिए आपको जो एम्प्लॉयज हैं उनका ध्यान रखना होगा, उनका अर्गोनॉमिक्स अच्छा रखना होगा, उनको वो इंसेंटिव देने होंगे, कंपनी के गोल से उनको मोटिवेट करना होगा, कई सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो वाले आंसर आपको लिखने हैं, साथ में एग्जांपल से आप बैकअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ईसॉप जो है वो प्लान से जो है एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा काम करने के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो सकती हैं बताने के लिए कि आखिर जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट सिस्टम होता है, जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है, वो मॉनिटरी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब आंसर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन से रिलेटेड है, कहता है कि मैनेजर को डिसलाइक करता है एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस एवेल्युएट करना, और इसको जो है दूसरी बात यह है कि एक एक साल में होते हैं तो वो गलत है। आज के जमाने में जो यंगस्टर्स हैं वो इमीडिएट चाहते हैं। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इशू? पहली बात तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ वेरी गुड थिंग, उसके बारे में चार पांच अच्छी बातें बताइए कि वो वैसे तो एक मार्क्स का ही है तो उस हिसाब से लिखिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एम्प्लॉय को क्या कहता है
पहली बात तो वो ये बताता है कि एम्प्लॉय ग्रो कैसे कर सकता है। दूसरी बात, जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनको, उनके लिए ये अच्छा इंसेंटिव है ना, तो वो सारी चीजें हैं। तीसरी बात, अगर फीडबैक की बात करी जाए तो ये बात सही है कि उसका टाइम पीरियड आज के जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए, है ना। डज इट मेक सेंस टू एलिमिनेट एनुअल और पीरियडिक अप्रेजल टुगेदर? तो ये इट 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 कैन मेक सेंस ओनली इफ इट इज अलाइंड विद द कंटेम्पररी टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट, ताकि जो इंसेंटिव है, वो मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉय को बहुत जल्दी जल्दी मिलता जाए। What are the effects of the social media and culture of instant feedback on tradition periodic evaluation in the workplace environment? जाहिर सी बात है, उसका, हम सोशल बीइंग्स हैं, उसका इफेक्ट तो हमारे ऊपर आएगा ही। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पूरी तरीके से अपना लें। देयर आर वेज टू डू इट। हम कई सारे जो है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इन योर वर्ड विच इज द बेस्ट स्टैंडर्ड पीरियोडिक अप्रेजल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कुछ भी बता दीजिए कि पीरियोडिक अप्रेजल सिस्टम वो अच्छा है जो एक तो ड्यू टाइम में हो जाए, ठीक है। दूसरा, वो क्लियरली गोल्स को इनिशियली क्लियरली पहले तो गोल स्टैब्लिश कर दे, उसके बाद उनको अचीव करने के तरीके बता दे। तीसरा, मॉनिटरी इंसेंटिव इज ऑलवेज अ वेरी गुड बूस्ट। चौथा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की जो प्रोसेसेस हैं उसको वो हो जाए, ठीक है। बीच में मिड मिड रिव्यू भी हो सकता है, सो दैट एम्प्लॉय को ये बताया जा सके कि आप और अच्छा परफॉर्म करो। व्हाट वुड यू यूज इन अ प्लेस ऑफ अप्रेजल टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस? ठीक है, यूज इन प्लेस ऑफ अप्रेजल टू टू इवेल्युएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। भाई, अप्रेजल की जगह में क्या यूज कर सकता हूँ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का? जाहिर सी बात है कि जो इनके मैनेजर्स हैं उनसे हम डील कर सकते हैं, उनसे हम ये जान सकते हैं कि आखिर जो क्या कहते हैं कि उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है उसको इवेल्युएट करने का। अगेन, मिड मीटिंग रिव्यूज कर सकते हैं जिसमें हम ये बता सकें कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है ना। तो कोई भी आंसर लिखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखिए, बैलेंस लिखिए, साथ में हो सके तो उसको एग्जाम्पल से जरूर